media persons, we had sought an appointment with the chairman of Rajya Sabha, Shri Venkaiah Naidu ji, about a week back. I would repeat, 1 week back. But since the Honorable Chairman of Rajya Sabha was touring the northeastern states of our country, as a result of which we could not meet him a week before, and today was the time given by his office. We, the political parties, on behalf of 7 political parties in Rajya Sabha who have signed the motion, and also on behalf of the ones who have not signed the motion, we met Honorable Chairman at his residence today at 12 noon. We were with him for about 40 minutes. So we have moved a motion for impeachment for the removal of Chief Justice of India under 5 listed grounds of misbehavior. We have sought his removal under Article 217, read with Article 124(4) of the Constitution of India. And we are very much sure that Honorable Chairman will take action, and we expect, of course, as positive action, as we, all the opposition parties are expecting that. Now, about the details, about the 5 points which I have mentioned are the grounds of misbehavior, I would request Mr. Kapil Sibal ji to mention in detail. जैसे गुलाम नबी जी ने कहा कि आज हम 12 बजे उपराष्ट्रपति जी से मिले और जो चेयरमैन है राज्यसभा के, और उनको हमने एक मोशन फॉर इम्पीचमेंट प्रस्तुत किया। संविधान के अंतर्गत अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज संविधान के अंतर्गत मिसबिहेव करता है, फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर, उसको पार्लियामेंट की अनुमति से इंक्वायरी होने के बाद उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये मोशन हमने राष्ट्रपति जी को दिया, और जैसे गुलाम नबी जी ने कहा कि 40 मिनट वार्तालाप हुई, लेकिन हमने कोई मेरिट की बात उनके साथ नहीं की। अब देश जरूर जानना चाहेगा कि हमने क्यों ये कदम उठाया, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम देश को विस्तार से बताएं कि ये कदम हमने क्यों उठाया। तो आप हमें थोड़ा सा वक्त देंगे। पहले मैं अंग्रेजी में, क्योंकि लिखित जो मैं पढ़ूंगा आपके सामने, वो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी भावना क्या है और ये कदम क्यों हमें उठाना पड़ा। We wish this day had never come. In the framework of our constitutional fabric, the judiciary holds a very special place.
Its independence is a constitutional imperative without which democracy will flounder. It must guard and protect itself from external interference and must be above suspicion. This is why judges must uphold the highest standards of integrity. They must also be tested by the same standards. In the scheme of things, within the judicial setup, the office of the Chief Justice is an exalted position. He is one among equals on the judicial side, but has vast powers on the administrative side. Since Chief Justice Deepak Mishra was appointed to the high office, there have been situations when questions have been raised about the manner in which he has dealt with certain cases and taken certain administrative decisions. There have been internal rumblings resulting in open discord amongst judges in the Supreme Court. This manifested itself when 4 senior-most judges held a press conference on January 12, 2018, where they publicly expressed their disquiet about the manner in which the Chief Justice was exercising his powers. In this context, they circulated a letter to the press that they had addressed to the Chief Justice. In the letter, and this is important, one of the concerns expressed by the judges was about attempts to unsettle through a judicial order the memorandum of procedure which stood settled. The judges stated that for some time, the administration of the Supreme Court has not been in order, and many things which are less than desirable have been happening. ये हम नहीं कह रहे, ये न्यायाधीश कह रहे हैं, कोर्ट जजेस कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं. They said that time and again, as senior members of the court holding a responsibility to this country, they tried to collectively persuade the Chief Justice that certain things are not in order and that he must take remedial measures. They lamented that their efforts had failed, and all 4 of them were convinced that unless the institution is preserved, democracy will not survive in this country. When asked, they expressed dissatisfaction at the manner in which late Judge Loya's case was being dealt with at the time. We were hoping that the anguish of the judges, as reflected in their statements to the press, would be addressed by the Chief Justice, and the Chief Justice in response would set his house in order. More than 3 months have passed. Nothing has changed. Recent communications of 2 senior judges to the Chief Justice reveal that the Chief Justice has not asserted the independence of the judiciary in the face of interference by the executive. When the judges of the Supreme Court themselves believe that the judiciary's independence is under threat and democracy in peril, alluding to the functioning of the office of the Chief Justice of India, should the nation stand still and do nothing? Should the people of this country allow the institution to diminish and not protect it both from within and without? That is what we were confronted with when contemplating action to ensure the independence of the institution that protects the rights of citizens and is the arbiter of the fate
of the democracy that we cherish. The choice was not easy, because either way, the repercussions are serious. The Constitution allows only one recourse to remedy the situation. Since there is no other way to protect the institution except to move an impeachment motion, we members of the Rajya Sabha do so with a very heavy heart. We took upon ourselves to move the impeachment motion in the background set out above, but on the basis of charges of acts of misbehavior that are set out in the impeachment motion. We do not wish to repeat those charges here in detail. We only wish to state that anyone occupying the office of the Chief Justice of India must be judged on the basis of the highest standards of integrity. The charges as stated suggest conduct unbecoming of a person holding the office of the Chief Justice of India. The first charge relates to the conspiracy to pay illegal gratifications by persons in relation to the Prasad Education Trust case and the manner in which the case was dealt with by the Chief Justice. It is on record that the CBI registered an FIR. There are several recorded conversations between middlemen, including a retired judge of the Orissa High Court, excerpts of transcripts of which are set out in the articles of charge. References to the Chief Justice by innuendo in these conversations are evident. The denial of permission to the CBI to register an FIR against Justice Narayan Shukla of the Allahabad High Court, when the CBI shared incriminating information with the Chief Justice, was itself an act of misbehavior. All this requires a thorough investigation. The second charge relates to the Chief Justice having dealt on the administrative as well as the judicial side with a writ petition which sought an investigation into the matter of Prasad Education Trust, in which he too was likely to fall within the scope of investigation. The practice in the Supreme Court is that when the Chief Justice is in a constitution bench, the matters are to be listed, requests for listing are made before the first puisne judge. This is an age-old practice. On November 9, 2017, when a writ petition was mentioned before Justice Chalmeshwar at 10:30 a.m., since the Chief Justice was sitting in a constitution bench, the same was directed to be listed later the same day. When the matter was taken up, a note dated November 6, 2017 was placed before the judges hearing the matter by an official of the registry. This is the basis of the third charge, alleging that the note of 6th November brought to the attention of Justice Chalmeshwar on 9th November, as the matter was taken up, was antedated. The charge of antedating is by all accounts very serious. The fourth charge relates to the Chief Justice having acquired land when he was an advocate by giving an affidavit which was found to be false. Further, despite the orders of the ADM cancelling the allotment in 1985, the Chief Justice surrendered the land only in 2012 after he was elevated to the Supreme Court. The fifth charge relates to the abuse of exercise of power by the Chief Justice in choosing to send sensitive matters to particular benches by misusing his authority as master of the roster with the likely intent to influence the outcome.
as representatives of the people, were entitled to hold the Chief Justice accountable, just as we are accountable to the people. The majesty of the law is more important than the majesty of any office. We hope that a thorough inquiry will be held so that truth alone triumphs. Democracy can thrive only when our judiciary stands firm, independent of the executive, and discharges its constitutional functions honestly, fearlessly, and with an even hand. अब मैं संक्षेप में हिंदी में आपको बता दूं कि मूल बातें जो मैंने आज आपको बताई हैं अंग्रेजी में वो क्या है। आज हम यहाँ बैठे खुश नहीं हैं कि आज आपके सामने हम आए हैं और हम आरोप लगाने आए हैं कि संविधान के अंतर्गत जो चीफ जस्टिस का जो पद है, जो मर्यादा उस पद की होनी चाहिए, उस पद की मर्यादा का चीफ जस्टिस ने उल्लंघन किया है। इस देश में या किसी भी देश में कोई भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो, उसका एक अपना अहम ओहदा होता है और उस ओहदे की हम इज्जत करते हैं, लेकिन उस ओहदे की चीफ जस्टिस साहब को भी इज्जत करनी चाहिए। और हमें ऐसा लगा, और हम ये बात नहीं कह रहे, न्यायाधीशों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद पब्लिक में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बातें देश के सामने रखी और कहा कि अगर चीफ जस्टिस साहब का ऐसा ही रवैया रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा देश को अवगत कराकर कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई प्रयास किए, चीफ जस्टिस के साथ बातचीत की और कहा कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है एक बार तय हो चुका है, उसके साथ उसको बदलने की प्रयास हो रहा है और ये जुडिशरी की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने ये भी और कहा कि कई और वैसी बातें हैं जिनके बारे में उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ बातचीत की और प्रयास किया कि किसी तरीके से इन बातों पे गौर हो और इसका कुछ समाधान हो, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो निराश रहे, प्रयासों करने के बाद उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। हम चाहते थे, और ये बात आपको मालूम है कि जनवरी 12, 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने पब्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हम तब चुप रहे क्योंकि हमें ये विश्वास था कि चीफ जस्टिस साहब उन बातों को पे गौर करेंगे और कुछ समाधान निकलेगा। लेकिन जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मार्च बीत गया, आज हम अप्रैल में हैं और कोई समाधान हुआ नहीं। तो चिंता की बात है क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जिसकी स्वतंत्रता पे कोई आंच नहीं आना चाहिए, अगर वो खतरे में आ जाए तो देश खतरे में आ जाएगा और लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है? या तो हम बैठे रहें और गिरावट देखते रहें ताकि जुडिशरी इस स्तर तक पहुंच जाए कि अब फिर उसको उठाना मुश्किल होगा। एक ये भी रास्ता है कि हम चुप रहते हैं, लेकिन हमने संविधान के प्रति ओथ ली है
और वो क्या है कि अगर संविधान का कोई भी ढांचा खतरे में आ जाए तो उसकी रक्षा करना हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक कर्तव्य है। आज हम वो कर्तव्य निभाने जा रहे हैं। हालांकि उस कर्तव्य निभाने में हमें कोई खुशी नहीं हो रही। हम कोई दिल से खुश नहीं है कि हमें ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन क्या करें। संविधान प्रमुख है, कोई भी पद हो वो संविधान के अधीन है और हमें संविधान की रक्षा करनी है। इस प्रस्ताव में जो हमने उपराष्ट्रपति जी को दिया, जो चेयरमैन है, उसमें हमने 5 आर्टिकल्स ऑफ चार्ज दिए हैं, 5 आरोप लगाए हैं और लगभग मैं और उन बातों को ऑलरेडी कह चुका हूं, तो मैं उसमें दोबारा विस्तार से नहीं जाऊंगा। नहीं, 5 आरोप हमने लगाए हैं जिससे साफ तय हो जाता है कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। एंड दिस अमाउंट्स टू misbehavior, because the constitution here uses the word misbehavior, not corruption. तो अगर चीफ जस्टिस साहब या कोई भी जज अपने पद का दुरुपयोग करे and that amounts to misbehavior, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको आगे ले जाएं। कुछ बातें हमने जो उस प्रस्ताव में रखी हैं, उस इम्पीचमेंट मोशन में रखी हैं, उसमें कई टैक्ट कॉन्वर्सेशंस भी हैं जो सीबीआई के पास थी और उसमें लिखित भी हैं, जिसमें एक रिटायर्ड जज उड़ीसा हाई कोर्ट का और बाकी जो मिडलमैन है, बिचौले हैं, वो लेन देन की बात कर रहे हैं और संकेत और कुछ बात नॉट डायरेक्टली चीफ जस्टिस के ऊपर भी उन्होंने कही है। तो ये बहुत ही गंभीर मामले हैं और इसके अंतर्गत आपको ये भी बता दूं कि जब सीबीआई चीफ जस्टिस साहब के पास गई कि हमारे पास सबूत है, एक जज शुक्ला साहब हैं जो सिटिंग जज थे, कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि हमारे पास सबूत है, तो चीफ जस्टिस साहब ने वो सैंक्शन नहीं दी। क्यों नहीं दी, किस वजह से नहीं दी? जब सीबीआई के पास सबूत थे, ये भी अपने आप में बहुत गंभीर बात है। और साथ साथ में चीफ जस्टिस साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे और जुडिशियल साइड पे ही उसी मामले के फैसले किए, तो वो भी अपने आप में गंभीर बात है। और साथ में जब चलमेश्वर साहब एक याचिका सुन रहे थे, जबकि चीफ जस्टिस साहब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठे हुए थे, और जो कन्वेंशन है कोर्ट का वो ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चल रहा हो तो फर्स्ट प्यूनी कोर्ट पे याचिका जा सकती है। तो जब चलमेश्वर साहब ने वो याचिका ली और कहा कि इसको हम बाद में दिन में सुनेंगे, तो तुरंत सुनने के पहले और जैसे ही सुनवाई होने लगी, एक नोट आ गया चीफ जस्टिस साहब से, और ये याचिका 9 तारीख नवंबर को सुनवाई होनी थी 2017 को, कि नोट आ गया कि ये 6 नवंबर का नोट आ गया कि आप याचिका नहीं सुनिए, कोई और बेंच सुनेगा और हम ही इसको देखेंगे। तो एक बैक डेटिंग में उन्होंने एक 6 नवंबर नोट को आरोप यह है कि बैक डेट किया गया, ये भी एक आरोप है। और दूसरा उन्होंने एक हल्फिया बयान एफिडेविट फाइल किया था जब वो वकालत कर रहे थे किसी ज़मीन के बारे में, और एक फॉल्स एफिडेविट, झूठा एफिडेविट फाइल किया था, और जो एडीएम ने फैसला दे दिया कि वो झूठा एफिडेविट था। और हालांकि 1985 में उस अलॉटमेंट को रद्द किया गया, लेकिन 2012 तक जस्टिस मिश्रा ने उस लैंड को सरेंडर नहीं किया, वापस नहीं किया। तब किया जब वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपॉइंटमेंट हो गई। तो ये भी अपने आप में एक गंभीर चार्ज है। और जिस तरह से उन्होंने कुछ संगीन केस, कुछ सेंसिटिव केस
किसी जज के आगे लगाए, कुछ जजों के आगे लगाए, उसमें भी हमने उदाहरण दिए हैं जिसके अंतर्गत हमने कहा है कि ये भी एक दुरुपयोग है अपने पद का। तो हम इतना ही कहेंगे कि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए और संविधान की रक्षा होनी चाहिए। और आज हम इस तरफ इसीलिए बैठे हैं कि रक्षा हो, और हमें विश्वास है कि रक्षा होगी। धन्यवाद।